Yo, what is up everyone, and we are back with another video guys। तो आज हम एक और हॉरर गेम के साथ आए हैं काफ़ी अरसे के बाद। तो आज ये हॉरर गेम है, ये इसका नाम है पैरानॉर्मल एंटिटीज़। तो इसकी स्टोरी भी साथ लिखी हुई आ रही है, जैसा कि तुम लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रही होगी। तो इसकी स्टोरी है, यू आर क्लिफ, a college student who is a brand new freelance cameraman for the show Paranormal Entities, the #2 rated ghost investigation show on the haunting and outdoor cable network. You have been hired to inspect the St. Augustine Asylum for the mentally ill. You will go into this facility, follow the producer's instructions through a radio earpiece. Keep your camera on and try to make contact with the spirits inside. If nothing happens, you will get $500 for your time. If you manage to get some amazing footage of the real paranormal activity on your camera. आगे नजर नहीं आ रहा, चलो स्टार्ट करते हैं। All right, Clint, Cliff, welcome to the St. Augustine's Asylum for the mentally ill. My producer Tom said good things about you. In your backpack is a flashlight, a voice recorder, an EMF, and a couple of little fun occult things. We'll let you know when to take those out. Ready to pay off some of those college debts and beer tabs? Well, of course you are. And when you're ready, enter in through those front doors. अच्छा, तो सबसे पहली बात तो ये, जिस भी जगह पे तुम लोगों को ये चीज़ नज़र आया ना, ये क्रिश्चियंस का क्रॉस में से, क्रिश्चियंस की गेम है मतलब, तो इसका मतलब है कि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। और इस गेम के साउंड इफेक्ट्स भी बड़े गंदे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से पढ़ना है, तो चलो। ओए होए, ग्राफिक्स हैवी हैं इस गेम के। Nice, the door was unlocked. It can get a little sticky sometimes. So here's the story behind the St. Augustine's Asylum for the mentally ill. It was founded in the 1880s, closed in the 1960s, and a lot of nasty stuff happened here. I mean, this place is only supposed to house around 500 patients, but at its peak, it was around 3,300 patients in here. I mean, the place was, less of a hospital and more of a place where you dropped your problems off and hope they disappeared. अच्छा, बता रहा है कि ये असाइलम है, यहाँ पे लोग छोड़ के चले जाते थे लोगों को, तो बस इसलिए छोड़ के जाते थे कि ताकि आप मसला हल हो जाए। पता नहीं कुछ ऐसी बकवास की सुन लिया होगा। और मैं बता दूं कि ये वीडियो तुम 720p पे एटलीस्ट देखो, हेडफोन लगा के देखो, ताकि तुम्हें फील हो कि मैं ये क्या यहाँ पे एक्सप्रेशन है। हाँ जी, तो ये हम यहाँ पे आए हैं। This is where the 100 hallways patients would convene, and we heard that the patients pre-1920 actually received decent care. Then the war hit, the depression hit, then the budgets all fell apart. The room you stand in once healed 20 patients in need of attention, and by the end, 150 patients would pass through this room, naked, starving, attacking each other at random, flaying themselves with metal wires from their beds. Be careful where you step. अच्छा, क्या करना है? इधर आना है। अच्छा, यहाँ पे आना है, ठीक। Alright, this is a good place to start. I want you to take out your voice recorder and I'll hopefully be able to awaken this place. Okay, spirits of St. Augustine, please reveal your presence to us. Show us that you are in this room. Allah khair. Feel free to interact with anything or speak to us. Use your words, use your voice, and let us know that you're here. Allah khair. ये बुला रहा है वो। Okay, play that back. Know that you're here. ये हम चला रहे हैं। Nothing. All right, let's try that again. हैं? अब? अच्छा, अभी तो जाना है। अच्छा। All right, let's try this. Ghosts of St. Augustine, please let us know that you are still in this hospital. Allah khair, बुला रहा है I give you permission to reveal yourself. I give you permission to come to life. Just give us a sign that you're here. Tell us where you are. Speak to us now into this microphone. Allah khair. All right, check that. Allah. Now into this microphone. Allah khair. All right, let's try one more spot. अच्छा, अभी तो जाना है। Ghosts of St. Augustine, you're all a bunch of ghoulish pricks. Show up or piss off. Whoa, did you hear that? Play that back. Pricks, show up or piss off. ओए हंस रहा है कोई। ओह अच्छा, ये वॉइस रिकॉर्डिंग है उनकी। All right, wait, looks like we got an investigation. All right, I want you to go
down the morgue hallway, and we're going to continue our investigation in the other gathering area. कह रहा था मोर को हॉलवे में जाना है. अभी देखा नहीं है ये जो जिन आए थे अचानक से. ओए भैंस की तुम यार. Okay, the 4 areas you need to visit to fulfill your contract. The East Social area is the first on the list. This is the area where the inmates who are deemed a danger to society would convene. You'll go to this room and perform a summoning ceremony. So walk into the center and we will begin. तो इधर से अंदर जाना है. ओ ये तो वही कमरा तो नहीं है. अच्छा नहीं है वो. अच्छा अब अभी अगर इस कुत्ते का बच्चे ने कुछ बकवास की ना, पीछे बैठा हुआ है स्पीकर के मेरे. तेरी बात नहीं कर रहा, ये गेम वाले की बात कर. This is the entrance to patient cells 200 to 219. We're talking extreme bipolarism, schizophrenia, dementia. Not necessarily dangerous, but it could be a challenge for society. Dang, the door's locked. Left clicks. This sucks. अच्छा अब तो करना क्या है? स्टेयरकेस टू फ्लोर 2. लॉक है सारा कुछ. जरा क्या करना है इधर? फिर चलता भी तो नहीं है. ये देख तो. This is the entrance to the patient cells 220 to 240. Sure. This is where they kept the lunatics, the murderers, the sociopaths, the worst of the worst, including Clive the Peeper Johnson. You'd think he would be a pervert with a nickname the Peeper, but the truth is far worse. He was extremely manipulative and very intelligent. He was a murderer and a memer. Most of his victims could never identify him because he managed to convince them to gouge their own eyes out with metal wires and even their own fingernails. He came here due to legal loopholes, and when the facility went off the rails and the doctor stopped caring, he jumped into action. The patients who didn't listen were tortured, and the ones who did wandered around the facility, blind, screaming, and in constant fear. This door's locked too. Let's just start the ceremony. तो यार अल्लाह खैर. अल्लाह खैर. Spirits inside this asylum. ओ ये क्या? We know that you're here. shadow है. We release you from your restraints. Come forward and live again. This person is no longer shielded from the realm of the dead. अल्लाह खैर. You may be seen, interact, and manipulate him in any way. मैनिपुलेट का क्या मतलब है? कुछ जंप स्केयर नहीं. बच गया. फोर्स कुछ गंद होने वाला है. कुछ गंद होने वाला है. कोई यहाँ से डंगर. Don't just stand there. Go check it out. ये खुला है. अल्लाह खैर. ये गंदा म्यूजिक लगा. मैं जाता ही नहीं हूँ. हुआ है कुछ. ये मैनिपुलेट करवा लो इसको. नहीं आई. अल्लाह की कसम नहीं आई. अंदर है कोई फोर्स. एक तो गर्मी है, ऊपर से मुझे डर लग रहा है. उसकी वजह से मुझे बहुत तेज पसीना आ रहा है. आँखें पंखे के बावजूद. अभी उड़ता हुआ आएगा. दरवाजे से अंदर उड़ता ही उड़ता आएगा. नहीं आ जा. ये क्या बकवास है? आ भी जा. अब ये बड़ा सस्ता था. Get the hell out of there. Just go to the front door and get out. बड़ी जल्दी नहीं आ जाती. Get the hell out of there. ये क्या? यहाँ पे ये नहीं था अभी. ये क्या?
पीपर पीपर All right, get out of this hallway and take your second right. Second right. Door's locked. Damn it. Oh, okay. There's a staircase. Take the staircase up to the second floor, and you should be next to a fire escape. You should be able to get out that way. So go up the staircase. Staircase. इधर ही आवा, इधर किधर जा रहा है? नहीं अभी नहीं जाइए, अभी बहुत गंदी गेम चल रही है। ये क्या बकवास है? ये लॉक है? ये क्या है? फायर एस्केप। Okay, we need to. Let's go get something to pry this door open. Go back downstairs. I bet you there was something downstairs we could probably use. ये जगह नहीं थी अभी यहाँ पे। वो अभी जगह नहीं। Hold on. That staircase wasn't there before. This place doesn't even have a basement. Yeah. What is going on? All right, just. I don't think you got any other choice. I think you gotta make your way downstairs. यार ये क्या बकवास है? दरवाजे बंद कर दिए ना, बेसमेंट थी जगह की, अब बेसमेंट भी आ गई कहीं से। बोल रहा है कुछ मैं खोलता ही नहीं हूँ ये वाला। कुत्ता दल्ला। बहुत गंदा आइडिया था ये गेम यार, ये गेम बहुत गंदा आइडिया था, ये गेम बहुत गंदा आइडिया था, नहीं करना चाहिए था। ये क्या हुआ? अच्छा वो दरवाजा बंद हुआ। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर। खोलता ही नहीं, बकवास करता रहता है। ओ ये जगह ऊपर भी थी जहाँ पे वो आया था। ये क्या बकवास है यार? पसीना आ रहा है बहुत। क्योंकि खेल में रहा हूँ ना हेडफोन लगा के, आपको नहीं पता ना क्या हो रहा है इधर बैकग्राउंड में, गंदा म्यूजिक चल रहा है इतना। पैंदी छोरी, पैंदी सीरी, फौज नहीं खुल रहा। फौज में मैं बढ़ गया। ओए खुलेगा दरवाजा तो लूप में फंसूंगा ना। ये क्या बकवास है? अभी तो ये जगह चेंज हो गई है, वो जगह चेंज हो गई। यहाँ पे बोला डांका था अभी। जगह ये क्या बकवास है? ये क्या है? दो साइड हैं, किधर जाना है? लॉक है, लॉक हो, ये लॉक है, शुक्र है। नहीं इनको नहीं देखना, पागल है। खोलूँ मैं, कोई निकले अंदर से कोई तो फिर। नहीं मैं नहीं खोल रहा, पागल है, छोड़ यार। क्या बकवास है? जगह चेंज कर रहे हैं यार। नहीं जाना मैंने इधर। यार ये भी फिर कोई दिल्ला कुत्ता आएगा उड़ता हुआ हैं? ओए ओए जगह चेंज होगी फिर से।
ये तेरी मौत। No eyes, don't see, don't no see, no eyes. नहीं 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 नहीं, कहीं से बहुत गंदी आवाज आ रही है। आ जाना फिर, अब क्या करना चाह रही है तू? ये वाला सस्ता था यार। ये अब क्या होगा? ये ओए, मैं अभी अंदर नहीं था उधर। दोनों साइडों पे जा सकते हैं, किसी तरफ जा सकते हैं यार। नहीं जाना मैंने इधर। Alright, confession time. It's about the eyes. I kind of had this from you. There's an urban legend, and I repeat, it's an urban legend about the peeper Clive Johnson. You see, there was a patient who suffered from dementia and swore that Clive was more than just a mere man. And he would kind of haunt this patient all throughout the day. You know, rampant hallucinations that progressively got worse, but at night he never saw the peeper. Then he discovered that if he closed his eyes, he could escape Clive. But whenever he opened them, Clive would be there, waiting for him and getting closer and closer. Eventually, the patient used a fork and he blinded himself. And while he was soaked in his blood from his sockets, he screamed to the entire hospital that he was free, he was safe. And a week later, 2 more patients charged Clive with stalking them, even though he was confined to solitary. I mean, it's crazy. They took their eyesights too. This pattern didn't stop. I thought it was BS, but based on what we've seen tonight, I'll pretty much believe anything. So, try to get the hell out of there, and if it gets too intense, try to shut your eyes. बड़ा जल्दी अकल नहीं आएगा। रहा आंखें बंद कर रहा, निकल जा पहले बाहर। ओए Damn flashlight broke. I can't use that anymore. अब फ्लैश ये अभी नहीं। वो बुला रहा है मुझे, कह रहा क्लोजर। मैं जाता ही नहीं। 20 मिनट हो गए स्टूडियो में। फिर है कोई? I see you now. बहुत तेज भाग रहा है रन। ये क्या लूट है मेरे पास? उठी नहीं अभी, कुत्ती का बच्चा। ये उठ गया ना थोड़ा सा। कुत्ता दल्ला। भागना भागना भागना। मर गया। खोल 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 खोलना, जल्दी चलना कुत्ता। मर जा। खोल तेरी। ये क्या है? ला 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 ला। ओ ये तो got a choice. Either he gets you, or you're gonna have to cut him out. यार आंखें कटो अभी मुझे। मैं करूँ। हाँ डाके मारा, आवाज आंखों में सुनी कुछ। Crap, man! I can't believe you just did that. You
freaking gouged your eyes out with a scalpel. Are you alright? I know you're not. Holy crap. Alright, we're getting a picture from your camera. Bad news is it's pitch black. There's no light. Your room, there's nothing I could see. The flashlight went out, and we don't even know where you are. I'm not going in there. Are you going in there? I'm not going in there. Hell no. Look, if you can't feel anything, I'm sorry, but we're not coming. What? I'm sorry, man. I have to go. अंदर भेज के उसको तो कह रहे हैं हम तुझे बचाने भी नहीं आते, उसने आंखें निकाल दी अपनी, वो बस कह रहा है कि निकाल दिया आपने आंखें अपनी। पैरानॉर्मल एंटिटीज गेम बहुत अच्छी थी लेकिन बहुत गंदी गेम थी, समझा? समझे? Thank you for playing. Please leave a review on the page to let me know your thoughts about the game. My name is Al-Hek and I made this game in 10 days for the Scream Jam 2020 event. My friend John and I founded GameDevHQ.com. We believe game development is an amazing skill and a great tool to tell stories. If you ever want to learn how to build a video game, we would love to show you how. This entire game was built using HQ training. तो बस आज का इतना ही। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए तुम लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को भी बताओ, दिखाओ वीडियोस। क्या करो यार, दिखाओ यार लोगों को व्यू। तू बोल क्या माइक में आके, चल बोल ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब का, और क्या बोलूं। चल निकल। तो बस आज के इतना ही, मिलेंगे अब कल तो नहीं, खैर जब अगली वीडियो आएगी, मतलब कोई एक कोशिश करता हूँ मैं इसी हफ्ते में दोबारा एक अपलोड करूँ, लेकिन जब अगली आएगी तब देखना। तो देखने के लिए सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबाओ। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए